dear students. I think I've done a lot of previous papers on history, on basic Punjabi, and today I will be doing an review of the previous paper of PHC Semester 2, Guru Nanak Dev University. Now, the most important problem which comes to find out the previous papers is, as I had told you before also, Bache, that PSC was discontinued in 2015 and it has been reintroduced in 2018. So, unfortunately, we do not have much papers on, PHC as such. See, although the papers are available prior to 2015, but because the syllabus is very different, so if I share any such paper or I analyze any such paper, it will add to your confusion. So what I came across was this paper of 2019. हालांकि बच्चे 2018 का पेपर जो है आई हैवन एबल टू गेट दैट पेपर बट डेफिनेटली जैसे मुझे वो भी मिलेगा आई विल डिस्कस इट विद यू. सो आज मैं आपके साथ जो है सेमेस्टर 2 का 2019 का पेपर डिस्कस करूँगी, ठीक है. और साथ ही में हम खुद भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हमने किए हैं और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस जो हैं आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो जैसे बच्चे हम लोग क्वेश्चन पेपर 2019 का देखने वाले हैं. सबसे पहले बच्चे क्यों ना हम इसको एक बार सिलेबस को देख लें. देखो 4 सेक्शंस है, राइट. सेक्शन ए में वी हैव द एलेक्जेंडर्स इन्वेजन एंड इम्पैक्ट, पंजाब अंडर चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक. सेक्शन बी में बच्चे वी हैव द कुशान्स एंड their contribution to Punjab under the Gupta Empire. Section C में we have Punjab under the Vardhan Emperors, socio-cultural history of Punjab from 7th to 1000 AD. Section D is development of language and education with special reference to Taxila and development of art and architecture. So ये जो पेपर है बच्चे, that is the paper of 2019. So let's see कैसे questions जो हैं पूछे गए हैं. सेक्शन ए के ऊपर जो है बच्चे दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चंद्रगुप्त मौर्य इन पंजाब. और दूसरा दे हैव आस्क्ड अबाउट हु वर कुशान्स एंड डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ कुशान्स टू पंजाब, राइट. सेक्शन बी में दे हैव आस्क्ड the section B, they have asked social and cultural life of Punjab under the Gupta Empire and the political achievements of the Vardhan emperors and their contribution. Then, in section C, they have talked about the political institutions in Punjab from 7th century to 1000 AD. And number 2, they have asked is explain the social development of Punjab from 7th century to 1000 AD. In section D, they have said discuss the various developments in the field of language and literature. And last is explain the developments in the sphere of art and architecture. ठीक है जी. So this was the paper which came in 2019 and definitely बच्चे as I promised you, अगर मुझे 2018 का पेपर भी मिलेगा मैं ज़रूर आपके सामने जो है उसको एनालाइज भी हम लोग करेंगे. अब देखो यहाँ पर बच्चे हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा आपका सिलेबस जो है ऑब्वियसली दैट हैज़ चेंज, राइट. सो दैट इज़ वन थिंग. तो आपके सेक्शंस जो हैं वो थोड़े डिफरेंटली बने गए हैं. लेकिन मैं जो ये सोचती हूँ कि देखो जैसे आपका सेक्शन ए जो है विच इज़ एलेक्जेंड्रा's invasion and its impact. Now let me discuss the important questions that I had kind of thought that they were in my mind. Just give me a second. हाँ जी. सो सेक्शन ए है हमारा एलेक्जेंडर्स इन्वेजन एंड इम्पैक्ट एंड पंजाब अंडर द चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक. देखो एलेक्जेंडर के इन्वेजन के ऊपर जो क्वेश्चन जो है विच can be asked is give an account of the Alexander's invasion on Punjab, right. This is very very important, that an account of Alexander's invasion. And number 2 question which can come is what do you know about the impact of the Alexander's invasion on Punjab. This is very very important and I feel that these 2 questions जो है इनमें से कोई एक question can be asked.
अगला है बच्चे आपका मौर्यन एम्पायर के अंडर। देखो एक तो आपका 2019 में आया हुआ है, दैट इज़ दे हैव आस्क्ड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन यहाँ पर जो है आपका अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस भी किया है, दैट इज़ डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ पंजाब अंडर द मौर्यन रूलर्स। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इससे इम्पॉर्टेंट है दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन which is describe the social, religious, and economic conditions of Punjab under Mauryas, right? So I think section A, we have kind of finished. Alexander की invasion का account, उसका impact, चंद्रगुप्त मौर्यास के अंडर जो है पंजाब की हिस्ट्री, एंड मौर्यास के अंडर सोशो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ पंजाब, राइट? Now, section B, we have the Kushans and we have the Gupta Empire. So, मुझे लगता है बच्चे इसमें जो क्वेश्चन आपका आ सकता है, देखो पहले तो क्वेश्चन आपका जो 2019 में आया है वो तो यही है कि हु वर खुशान्स एंड डिस्कस देयर कंट्रीब्यूशन इन पंजाब, राइट? सो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन कुछ ऐसा भी आ सकता है कि खुशान्स में से जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर है वो कनिष्क है। सो दे कैन आस्क यू के डिस्कस इन डिटेल और डिस्कस इन गिव एन अकाउंट ऑफ कनिष्क। गिव एन अकाउंट का मतलब होता है और गिव हिज अचीवमेंट्स में उनका कॉन्क्वेस्ट भी आ जाएंगे, उनके कंट्रीब्यूशन टू बुद्धिज़्म, लिटरेचर, आर्ट एंड ट्रेड भी आएगा। अनदर क्वेश्चन विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द कनिष्क रूल ऑन पंजाब। कनिष्क के साथ बच्चे गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट की बात भी हम करते हैं, हालांकि दैट कैन कम इन दी आर्ट एंड आर्किटेक्चर एज वेल, बट यहाँ पर भी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द salient features of the Gandharv school of art during the reign of Kushans, right? So we have covered this. Now under the Gupta bache, this is very very important topic. देखो एक तो they can ask you about the political history, right? This is important. Political history, they can ask you the political history ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। एक बचे जो क्वेश्चन मुझे लगता है इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट द कल्चरल एंड द साइंटिफिक डेवलपमेंट्स अंडर द गुप्ता। अब यहाँ पर हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री भी कर ली, उनकी कल्चर और साइंटिफिक डेवलपमेंट्स भी कर ली। इसको कंबाइन करके दे कैन ऑल्सो आस्क यू वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ why is Gupta period known as the golden age in the ancient period? So it is known as golden age because number one, it provided political unity, number two, because of its cultural and scientific developments, cultural in terms of literature, art and architecture. So these points combine in that question अगर आपको पूछते हैं कि why Gupta period was known as the golden age in the ancient period, right? So I'm sure that हमने सेक्शन ए कर लिया, सेक्शन बी डिस्कस कर लिया, अब आता है सेक्शन सी। देखो सेक्शन सी में आपको ऑब्वियसली डिस्कस दी पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ पंजाब अंडर द रूल ऑफ वर्धांस। हालांकि बच्चे वर्धांस में जो है प्रभाकर वर्धन से लेके राज्यवर्धन के बाद जो है हर्षवर्धन है। सो आपके तीनों रूलर्स को जब आप एक्सप्लेन करते हो, सो सबसे ज़्यादा जो है टाइम पीरियड वो हर्षवर्धन का है, आप उसी को एक्सप्लेन करते हो। सो इसको एक डिफरेंट वे में कर सकते हैं, डिस्कस दी अचीवमेंट्स ऑफ हर्षवर्धन। अचीवमेंट्स ऑफ हर्षवर्धन के टाइम पर जो है वो आपको उनके कॉन्क्वेस्ट भी लिखने पड़ेंगे, प्लस हिज एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कल्चरल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ हिज लिटरेरी वर्क्स, राइट? सो दिस कैन बी रिटन। सो वर्धान में ऑफ कोर्स द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, डिस्कस इन डिटेल द अचीवमेंट्स ऑफ हर्षवर्धन एंड उनके कॉन्क्वेस्ट जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो आपने ज़रूर पढ़ के जाने। दूसरी बात बच्चे, मैंने आपको कहा था कि 2020 में एक ट्रेंड जो उभर कर आया था टू गिव यू द सब पॉइंट्स, लाइक अगर आपने जो है कुछ भी कोई क्वेश्चन के आगे सब पॉइंट्स देकर जो है सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ऐसा कुछ ट्रेंड भी है, उस लिहाज से अपने चैप्टर्स जो हैं आपने अच्छे से पढ़ने हैं, राइट? अगला है बच्चे आपका सोशल कल्चरल हिस्ट्री ऑफ पंजाब। दिस कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली, दैट दे कैन गिव यू द टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड के बीच में है 7th to 1000 AD, टेल अस अबाउट द सोशो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ पंजाब। देखो ये तो बच्चे बिल्कुल ऐसा ही है, राइट? आई थिंक वर्धान का हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। एक बच्चे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है आ सकता है, दैट इज़ कि वो कह ले कि जैसे
वर्धान एज में जो है सोशो रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पंजाब जो है वो कैसे थे, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। फिर आपका बच्चे सोशो कल्चर, तो बच्चे देखो मुझे लगता है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन सोशल कल्चरल हिस्ट्री के साथ वो आपको एक और क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया भी था ये वाला, एंड इसका रिकॉर्डेड लेक्चर इज़ ऑन द गूगल क्लासरूम, they can ask you about the political developments in Punjab from 700 AD to 1200 AD. So this can be a question, or describe the struggle for power between the Hindu Shahi kingdom and the Turkish rulers of Ghazni, और द कॉन्क्वेस्ट ऑफ महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। ये आपके बच्चे बुक के जो क्वेश्चंस हैं उसके सब पार्ट्स हैं। एज आई टोल्ड यू कि आपको सब पार्ट्स भी जो है ये आ सकते हैं, ठीक है जी। और लास्टली जैसे ये मैंने कहा था सोशल कल्चर, तो आपको बिल्कुल ऐसे की ऐसे वो आपको पूछ सकते हैं। अब आ जाता है आपका सेक्शन डी, वी हैव द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन। इसको एज सच इकट्ठा भी दे सकते हैं, अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन पंजाब, just hold on बच्चे। Now trace the education of Punjab up to 1000 AD, or trace the history of literature in Punjab up to 1000 AD. Now also describe the development of art and architecture in Punjab up to 1000 AD. अब नॉर्मली क्या होता है बच्चे सेक्शन डी हमेशा छोड़ के जाते हैं, जबकि मुझे लगता है बच्चे सेक्शन डी में हमेशा आपके क्वेश्चंस जो हैं दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। देयर विल डेफिनेटली बी अ क्वेश्चन ऑन द art and architecture, just right. So as I will just continue what I was saying, that lots of students don't kind of do the section D or they omit, but trust me बच्चे section D के questions हमेशा straight forward होते हैं। Development of language and education can come together, or separately development of art and architecture in Punjab up to 1000. And if you are good in kind of sketching or drawing, so architecture में अगर आप थोड़े buildings के कुछ जो है यूनिक फीचर्स ड्रॉ करके दिखाते हो, दैट विल गिव यू मोर मार्क्स, राइट। ऑल राइट, सो लेट्स जस्ट सी आ पेपर अगेन बच्चे। 2019 का मैंने आपके साथ पेपर जो है डिस्कस कर दिया है। जस्ट अ क्विक रिविजन, सेक्शन ए द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, and then who were Kushan's contribution of Kushans to Punjab. Section B, the social cultural life of Punjab under Gupta Empire, political achievements of Vardhan emperors and their contribution. Section C, the political institutions from 7th century to 1000 AD, and the social developments of Punjab from 7th century to 1000 AD. Section D is absolutely straightforward. Various developments in the field of language and literature, and developments in the field of art and architecture. So I think we've discussed like the entire syllabi, whatever questions which can come on them, and the paper of 2019. I promise the moment I get my hands on the paper of 2018, I will definitely share it with you, right? So till then, read your chapters very thoroughly, right? And I'm sure you all will shine like stars. Thank you and take care and bye bye.